No placement report is going to tell you the truths that I am going to tell you today. पता है मैं मॉन्डिलेस का जो गेमिंग था मतलब जब वो हमारे कैंपस में आई थी उसने एक गेम खिलाया था जिसमें आपको एरिया सेल्स मैनेजर बनना था एंड मैंने उस गेम में टॉप किया था पूरे कैंपस में एज फार एज आई नो बट आई नो आई एम ऑन द टॉप 5 फॉर श्योर एंड इट डिड नॉट शॉर्टलिस्ट मी फॉर द नेक्स्ट राउंड द रीजन वाई बिकॉज माई प्रीवियस academics were not perfect. जस्ट इमेजिन कि आप एमबीए में आए हो, बहुत मेहनत करके आए हो, सब अगेंस्ट द सिस्टम जाके एंड देन समथिंग दैट यू डिड बैक इन 2016, 2018 दैट मैटर्स नाउ देन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एंड दिस माय फ्रेंड्स इज द डोर टू रियलिटी. दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी एडिटेड. मैं कोई आपके सामने ऐसे प्रदर्शन नहीं करने वाला. इफ यू वांट टू स्टे यू स्टे, इफ यू वांट टू क्विट यू क्विट, आई डोंट केयर because this is just raw emotions on how exactly the placement process works and what you should be knowing before you join your MBA or if you are planning to do your MBA. My name is Hemant Ulsan and I have lived through this MBA placement circus, and today I am pulling back the curtains on everything. I mean, as much as I know everything, like जो स्लेवरी, आई वुड से इट्स स्लेवरी, कि किस तरह से आपको इस पूरे प्रोसेस से लेके जाया जाता है जहाँ पे एम्पैथी नहीं होती, जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होती, जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती एंड फेट, योर प्रीवियस एकेडमिक्स, योर बैचमेट्स एटीट्यूड, योर स्टूडेंट बॉडीज एटीट्यूड, योर यू नो जो स्टाफ है उसका एटीट्यूड, हाउ ईच ऑफ दीज थिंग्स डिफाइन वेयर यू एक्चुअली लैंड अप. You'll also learn how your class 12, 10, 12 marks never leave you till your deathbed, at least till you are in your MBA. ठीक है? How companies have already had, how your fate have already decided even before you spoke a single word, and how the 25 LPA, 30 LPA packages is 1.2 to 1.5 lakh per month, which if you divide it, multiply it by 12, it is around 18 lakh. ठीक है? All of it is going to be there. This is not going to be comfortable, but it is going to be real. So if you are in for the real thing, be here with me. So here is the first brutal truth. आपका academics, past academics आपको जिंदगी भर haunt करने वाला है. It will strip you off from many opportunities. Does not matter आप अपने MBA कॉलेज के स्टीव जॉब्स बन जाओ. अगर आपका क्लास 12 में मार्क्स खराब था, it will sit on your application forever. It will be in discussion forever, and that is the problem. You might have exceptional business acumen, strong leadership potential. आपने projects किए, सब कुछ किया MBA में, but your marks are not great, and by नहीं होगा. And that's very suffocating. There's so many times, I have a crazy FMCG background में मैं 8 साल ऑलमोस्ट दुकान में बैठ चुका हूँ. मैं जानता हूँ चीज़ों को. मेरे को एक भी शॉर्टलिस्ट नहीं आया FMCG की, एंड लाइक आई टोल्ड मॉन्डलेस का तो मैंने टेस्ट भी क्रैक कर लिया, फिर भी नहीं आए बिकॉज grades. They, like, the recruiters are fine taking someone with an 85 percentile who has no passion for this opportunity than getting someone who is 70% but would die for this opportunity. And the early you accept this reality, that your academic past is a baggage, you will sooner stop fighting this ghost and start strategizing around it. And your mental health will be better. And if you don't accept, भाई रोते रहो, कुछ नहीं कर सकते. The second thing that you should have in your mind is about hot list. What is this hot list, यार हेमंत? Simple, and that everyone knows when you get into MBA. And क्योंकि मैं प्लेसमेंट कमेटी में था तो मेरे को भी पता था कि जब एक कंपनी आती है तो उससे कुछ टाइम पहले ही उनको सारे रेज्यूमे भेजे जा चुके होते हैं. What they do is a convenient filter that they put in based on your past acads, based on the college you have, based on the work ex you have, and then they will come up with a preferential list कि भाई मेरे को इस कैंडिडेट से पहले मिलाओ. ठीक है? Does not matter who you are, does not matter, like your fate is already decided in some manner. अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट जा रहा है तो मान लो कंपनी ये सोच के आई है कि भाई इसको तो लेंगे. ठीक है? अगर कैंडिडेट ने कोई रीजन नहीं दिया ना रिजेक्ट करने का तो वो हो गया.
Correct, 100%. And that is how it works. So if you have got a short list and there is a reference कि इस order में लोगों को जाना है, know that if you're not in the hot list, there might be a chance that you will not, like अगर वो लोग 4 लोग को लेने आए हैं, आप 10th नंबर पे जा रहे हो, most probably आपका नहीं होगा. That being said, कि बहुत बार ऐसा होता है सिर्फ इंटरव्यूज इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि फॉर्मेलिटी है. आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया, इंटरव्यू ले लिए, जो फर्स्ट सेकंड गया था उसके सेकंड थर्ड राउंड चल रहे हैं, एंड बाय द टाइम आपका इंटरव्यू आया, जस्ट खत्म हुआ, बोल दिया प्रोसेस क्लोज है भाई, हम लोगों जिन लोगों को चाहिए था ले लिया. एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. मतलब आपने अपना मुंह नहीं खोला, दे डोंट नो हु यू आर, व्हाट यू डू, हाउ गुड यू आर, डोंट डज नॉट मैटर टू देम. इफ यू फिट इन व्हाट दे कॉल एज अ क्राइटेरिया, तो सीख ये है कि अगर आप पहले नंबर्स पे हो उस प्रोसेस में, then give it all. If you want that company, just give it all, and then there is a very, very big chance that you're going to be in. There's no way that they will reject you. Third, and the most crushing thing I would say, not hot list, not your past accounts, feedback. भाई बहुत बार होता है, आपने बहुत तोड़ इंटरव्यू दिया, आपको लगा यार हो गया, मतलब मैंने तो बहुत अच्छा किया, इफ द पर्सन वाज हैप्पी, दे सीम टू बी हैप्पी, एंड यू थिंक यू हैव गिवन योर बेस्ट शॉट, बट यू डिड नॉट गो टू द नेक्स्ट राउंड. किस लिए? You cannot ask someone for a feedback. If you ask your placement committee कि भाई feedback दिलवाओ, generic feedback at max कि भाई not fit या something, no one is giving you a proper feedback. यार अगर आप लाइन से 6 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए हो और आपको फीडबैक नहीं मिल रहा, बट आपसे सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तू बेहतर बन, बेहतर बन, किस चीज में बेहतर बने हैं? गिव अस द फीडबैक, टेल अस. नहीं, देयर इज नो फीडबैक, इट्स जस्ट घोस्टेड. उनको जिनको लेके जाना है लेके जाती है. आई थिंक that that you know बहुत बुरा लगता है ये चीज, when you are putting so much time and efforts into preparing for that company, and they just come, they reject you, there's no feedback, there's no empathy, nothing. क्या करे इंसान? And adding on to that, the KT sessions, the knowledge transfer session that you get from previous interns, from previous people, previous seniors who got it, is at max superficial mostly. कि जस्ट बी योरसेल्फ. भाई जैसे मैं माई सेल्फ था ही नहीं, मैं कोई और बन रहा था. यार ये कैसा बात हुआ? जस्ट बी योरसेल्फ, टेल अस व्हाट द रियलिटी इज. मुंह पे बोलो कि भाई अगर तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो चांसेस है कि तुम्हारा नहीं होगा. क्यों बना रहे हो? अब क्यों किसी को क्लाउड में रख रहे हो? व्हाई गिविंग समवन होप एंड देन इट्स लाइक नहीं, नहीं होना है भाई. ये तो तुमको पता ही होना चाहिए. ये कैसा बात है? मेरे को क्यों पता होना चाहिए? भाई बता दो अगर पता होना चाहिए. नहीं पता, आई एम वेरी नहीं. ठीक है, you are thrown into a high stakes game without proper coaching, ठीक है, without feedback, without empathy, without support system, and they expect a miraculous improvement out of you. यार हम लोग भी इंसान हैं, बहुत लोग इंसान हैं. आप किसी को पानी में फेंक के ये नहीं सोच सकते कि जान बचाने के लिए स्विम कर लेगा. Fourth thing, and this is very uncomfortable, I do not mean it in a sexist way, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, but भाइयों, the gender preference thing that happens in placement season, be it summers, be it final, is real. There are a lot of companies that came to our campus who, did not even shortlist any guy. Lot of companies which came with the thought process कि भाई वो पता है वो लेके लड़कियां ही जाएंगे. एक दो लड़के को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, उनका पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है. वो बैठे हैं, उनका इंटरव्यू भी नहीं लिया, उससे पहले प्रोसेस क्लोज कर दिया. ठीक है, दे आर वेरी क्लियर. एंड with the rising need of ESG, environmental social governance, यही है शायद full form, companies want to bridge that gender gap, which is good for them, and it is important. यार एक talented लड़की लोग हैं, उन लोगों को workforce में लाना है, but that happens at the cost of you know, some deserving candidate who could not make it because the company right now does not need it, and that also sucks a lot. No, like people talk about it, they do not tell it out very openly. Then there are a lot of people who don't even acknowledge it. But जो है वही है कि companies can't openly say they refer females, but they show that in the interviews, they show that in the shortlist. And इसमें तो सबसे बड़ा नाम obviously कि भाई
वो हर कॉलेज में ही करता है कि वो आता है लड़के लेने आता है। 30 पीपल में से 3-4 लड़के लेके जाएगा, 26 गर्ल्स। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों का ही चांस नहीं आता, वो लड़कियाँ शॉर्टलिस्ट करता है और लड़कियों का ही इंटरव्यू नहीं आता क्योंकि उससे पहले उन लोग को अच्छी लड़कियाँ मिल गई उनके अकॉर्डिंग, जो उनका हॉट लिस्ट के अकॉर्डिंग था। सो दैट 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 किल्स अ लॉट। अ, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, आई वुड डोंट डोंट वांट टू नेम एनी कंपनी हियर, बट यू नो इट इट इज़ समथिंग यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट। इट इज़ समथिंग यू नीड टू एक्नॉलेज, वरना फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बट हियर इज़ वन अदर साइड व्हिच आई हैव टू एक्नॉलेज कि जब ऐसा होता है ना, तो बहुत बार ऐसी बातें चलती हैं कि क्या बोलते हैं ना, यार ये लड़की तो इसलिए हो गया क्योंकि वो तो डाइवर्सिटी हायर है, एंड दैट मस्ट बी तो फीलिंग बैड फॉर देम। यार वो भी खुश नहीं है कि मैं किसी का मतलब, उनकी तो गलती नहीं है, राइट? दे गॉट शॉर्टलिस्टेड, दे गिव द इंटरव्यू, दे वेंट इन। तो ये याद रखना, तुम्हारे बैच के लड़कियों की गलती नहीं है कि कंपनीज लेके जा रहा है। दिस इज नॉट बैशिंग योर बैचमेट, दिस होल थिंग दैट आई टोल्ड डिड नॉट बैश माय बैचमेट्स, दिस बैश द कंपनी कि भाई अगर कुछ प्रेफरेंस है डायरेक्ट बोल दो। इनफैक्ट व्हेन इट हैपेंस, द प्रेशर इज ऑन द गर्ल कि उसको हमेशा प्रूफ करना होता है खुद को, उसको हमेशा लिव अप करना है उस एक्सपेक्टेशन को कि क्योंकि भाई अब हायर हुए हैं और सब लोग बोल रहे हैं डाइवर्सिटी हायर है, नहीं मेरे को दिखाना है कि आई एम वर्दी ऑफ दिस, एंड इट इज़ सबकॉन्शियस। ये कोई बोलेगा नहीं डायरेक्टली, सब बोलेंगे नहीं यार मैं तो डिज़र्व करता था ये वो। रियलिटी कुछ लोगों को पता है, एंड देन दैट रियलिटी आल्सो ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ प्रेशर व्हिच इज़ समथिंग पीपल डोंट टेल अबाउट। सो इट्स लाइक विजय माल्या वाला केस जो विराज शमानी का हो रहा है कि वो खुद को भोला-भाला बता रहा है, बट ही नोज़ दैट द प्रेशर इज़ ऑन हिम, इफ ही कम्स बैक more truths will come out, there's a lot of things that he has to get correct, एंड वो हमेशा चोर ही कहलाएगा, चाहे वो कितना ही पॉडकास्ट कर ले, चाहे कोई कितना भी सिंपैथी निकाल ले। तो इट्स ऑलवेज़ लाइक कि तुम कितना भी कुछ कर लो, समवन विल ऑलवेज़ कम एंड से यार तुम तो डाइवर्सिटी है हो, एंड दैट थिंग्स अ लॉट। नाउ द नेक्स्ट बिग लाई, एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, सीटीसी, एलिफेंट इन द रूम। भाई 25 लाख का एवरेज, 26 लाख का एवरेज, 27 लाख का एवरेज। पहली बात तो कैट एस्पिरेंट हो, एवरेज का मतलब समझो। 2 लोग हैं, एक को मिला 80 लाख, दूसरे को मिला 4 लाख। 84 डिवाइड बाय 2, 41 का एवरेज। क्यूड। एवरेज डज़ नॉट गिव यू द राइट पिक्चर। व्हाट गिव्स द राइट पिक्चर? मीडियन। मीडियन मतलब बीच का है, इसके ऊपर आधा लोग का लगा है, इसके नीचे आधा लोग का लगा है। ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि 25, मान लो मैं आपको एक फिगरेटिव बताता हूँ कि 24 लाख का आपका सीटीसी लगा, ठीक है? उसमें से आपका वन टाइम बोनस है 3 लाख। आप जॉइन करोगे, आप 1 साल रहोगे, वो 3 लाख रहेगा। 1 या 2 लाख हो गया आपका रिटेंशन बोनस का, आपको ये सेकंड ईयर में मिलेगा अगर आप रुके रहे, ठीक है? मान लो 1 ही लाख ले लो, तो 4 लाख गया, 20 लाख बचा, ठीक है? 20 लाख में से अब आपका पीएफ कटेगा, आपका ग्रेच्युटी हटेगा, अगर स्टॉक ऑप्शन हुआ वो हटेगा, ठीक है? सब हटा-वटा के मैं मान के चल रहा हूँ कि और आपका 18 18 लाख आपको हाथ में आएगा। फिर उसके बाद टैक्स कटेगा। तो जो सेलिब्रेशंस करते हैं ना लोग, फैमिली खुश हो जाती है, रिलेटिव्स जेलस हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं, अब दैट दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव, ठीक है? आप सपने सँजोने लगते हो कि भाई मज़ा आ जाएगा, वो ना सच नहीं है। कॉस्ट टू कंपनी और इन हैंड में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, एंड ये चीज़ पता है आपको जॉब शुरू होने के बाद पता चलेगा, बट मेन जब आप वो ऑफर लेटर देखोगे इट विल हिट यू, एंड यू आर इन द टॉप 1% ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, बट देन अब आपके पास लोन है, तो आप ईएमआई दे रहे हो, आपके पास और कोई अपनी इच्छाएँ हैं। मिला-जुला के यार आप कोई दूसरे सिटी में जा रहे हो, अगर आप पहले से बैंगलोर, मुंबई वो सब में नहीं हो, तो वहाँ पे आप रेंट दोगे, खाना दोगे, फैमिली से दूर रहोगे, ठीक है? अपना और कुछ खर्चा करोगे एंटरटेनमेंट में, 20-30 हज़ार रुपए बचा लोगे यार, but it's like after everything you are at the end left with 20-30,000. So you are rich, but you're poor. And that is the reality check no one gives you. And I'm not even including the IMs which inflate it. K usually does not, because K is like, but K karta hai ki nahi, I cannot say, because it is not audited from my limited knowledge. It could be if I'm wrong, sorry for that. मैंने देखा, मेरे को तो उतना लगा नहीं, थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, ठीक है?
बट जो कॉलेजेस थोड़े लोअर साइड में होते हैं, भाई वो तो डेफिनेटली इन्फ्लेट करता है बिकॉज़ दे वांट पीपल टू बी they want people to be here. But Udaipur is a great example. I think, I don't know if they still do it, but they used to do, they used to not, you know, um, वो कराते थे, ऑडिटिंग कराते थे, दे यूज्ड टू गेट इट ऑडिटेड, और उसमें सच होता था. सो दैट इज़ द वन थिंग कि यार इन्फ्लेशन इन्फ्लेटेड हर जगह रहेगा, बट द रियलिटी इज़ इवन आपको अच्छा लग गया, तो भी इट्स नॉट गोइंग टू गारंटी यू कि आप बहुत मज़े में ज़िंदगी काटने वाले हो. Next 4-5 years, if you have a loan, is going to be a struggle no matter what. Now, we have talked a lot about the problems with the companies, but is it all about the companies? Is Are we always the right kind of people? The answer is no. I mean, ये बोलते हुए मेरे को बहुत odd लग रहा है, but we are also a big part of the problem. The one thing is, आप एक चीज नोटिस करोगे जब आप अंदर जाओगे, there are few people who have really good profiles and they will get repeated shortlists. But what happens is when people make it to IIM, a lot of people, not everyone, a lot of people, they don't prepare at all. वो ना कंसल्टिंग का प्रिपेयर कर रहे हैं, ना अपना केस प्रेप कर रहे हैं, ना अपना डोमेन प्रेप कर रहे हैं, ना एचआर प्रेप कर रहे हैं. एंड क्योंकि उनका प्रोफाइल अच्छा, उनको इंटरव्यू आते जा रहा है, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, एंड देयर मेंटल हेल्थ इज डेफिनेटली इम्पैक्टेड. आई एम नॉट सेइंग कि भाई उनका मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट नहीं हो रहा, उनके साथ अब वो तो हमारा अपॉर्चुनिटी होल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट they are not preparing the way they should, and no one is going to tell them this, no one is making them accountable. So the few good people who have not prepared, they'll keep getting shortlisted because they are available in the pool and no one can stop it. But on the flip side, one more thing happens. भाई हमारे सीनियर्स, जो मेरे को बहुत गलत लगता है, आके बोलते हैं कि यार ये तो बहुत अनसर्टेन है, अभी कुछ भी ले लो, चलेगा, बाद में स्विच कर लेना. एंड सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. लेट्स से XYZ कंसल्टेंसी है, जो उतना बड़ा नहीं है लेकिन उधर छोटा भी नहीं है. एक बंदा जो आईआईटी से है, उसने वो ले लिया क्योंकि उसको इस प्लेसमेंट प्रोसेस से बाहर होना था, उसको इस एंग्जायटी से बाहर होना था, इस प्रेशर से बाहर होना था, व्हिच इज़ फेयर फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव कि भाई मेरे को नहीं जीना मर-मर के. बट दैट पर्सन नोज़ कि वो 6 महीने में छोड़ देगा. समवन एल्स who really wanted to be in that company, who would have stayed for longer, they did not get a chance because there's someone who is uncertain about the placements and took that chance, and बस मतलब student don't accept offers they want, student accept the offers they get. एंड मैं कभी ऐसे कंपनीज में अप्लाई नहीं करता था जिसमें मुझे नहीं जाना, बिकॉज फर्स्ट ऑब्वियसली कि भाई मेरे को उसका प्रेप भी नहीं करना है, सेकंड व्हाई वुड आई टेक समवन एल्सेस चांस, एंड माय फ्रेंड्स नो इट, दे विल टेल यू, दे इवन माय फ्रेंड्स केम टू मी एंड सेड भाई मैं तेरी जगह सब में अप्लाई करूंगा, व्हाई आर यू नॉट अप्लाइंग. मैंने तो पहले 20-30 कंपनी में अप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरे को जाना ही नहीं है फिनेंस में, कंसल्टिंग में. बट lot of people do because they know they will get the shortlist, one, and second obviously कि भाई you can always switch. So this opportunity hoarding crisis is something which no one talks about. So in middle of all of this drama, what gets affected is your mental health. I've seen brilliant people questioning their self-worth. I've seen them questioning their decision to do an MBA, questioning if they're worth it or not. Can they be successful or not? You know, were they delusional that, they will succeed? Will they ever get any high package? Will the parents be proud of them? The- we have seen closest friends become kind of dushman because, you know, there's so much chaos at that time. Everyone is suffering mentally. No one is in right frame of mind to talk what exactly to talk, right things to talk. The bottom 20% of the batch is always looking on the clock. They're just seeing कि भाई दिन निकल रहे हैं, ग्रेजुएशन सामने आ रहा है, कंपनीज अच्छी नहीं आ रही, रोल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं. उन बीच में क्लास प्रोफेसर्स को उतना मतलब नहीं है कि भाई तुम्हारा प्लेसमेंट है क्या है, तुम्हारा अटेंडेंस जा रहा है, तुम्हारा अटेंडेंस जा रहा है, ठीक है. इफ़ यू आर लोअर देन 80% बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न, दे डोंट केयर, ठीक है. द लैक ऑफ एम्पैथी इन ऑल दिस इज़ वेरी ब्रूटल, एंड I think it was less in Kozhikode. In other colleges, I've heard it's worst. I'm actually grateful to Kozhikode कि भाई
वहाँ पे लोग अंडरस्टैंडिंग थे, वहाँ पे प्लेसफ़ॉर्म डिसेंट था, वहाँ पे हम जाके ऑफ़िस में कभी भी बात कर सकते थे, प्रोफ़ेसर्स थोड़ा बहुत समझते थे। इन अदर कॉलेजेस दैट आई हैव हर्ड इट वेरी, वेरी बैड and it consumes you from inside. Day 0 से day 10 you will see the decline of companies. You will see a lot of people getting placed. आपके दोस्त रुकेंगे 5, 6, 10 दिन बट फिर वो लोग भी जाने लग जाएँगे अपने घर, कोई ट्रिप मारने चला जाएगा एंड यू विल फील हेल्पलेस, यू विल फील कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? ठीक है, बट देयर इज़ नो आंसर टू इट एंड दैट माय फ्रेंड्स is something that stays with you for long. If not for your whole life, it stays with you for quite long. So then इतना कुछ सुनने के बाद आप बोल रहे होगे कि हेमंत एमबीए तो नहीं करना चाहिए फिर एंड आई विल प्रेजेंट टू यू द कॉन्ट्ररी पार्ट विच इज लाइक हाउ पीपल थिंक वो लोग सिर्फ पैसे के हिसाब से एमबीए सोचते हैं नो डाउट प्लेसमेंट्स इज इम्पोर्टेंट बट देन योर नेटवर्क इज इम्पोर्टेंट द काइंड ऑफ पीपल यू मीट इज इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका बैचमेट वीपी बने फाउंडर बने कभी वो आपको हायर कर रहा है सो मैनी मैं अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ एलुमनाई व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे रोल्स आते हैं एंड दीज आर रोल्स दैट आर नॉट गोइंग ऑनलाइन these are roles that are not going on the portal these are the roles that are being circulated in the WhatsApp group closed in the WhatsApp group, and I am getting access to them because yeah, I am from a good institute. I am from a place jahan pe, you know, people have become good. So here's the thing: you can't fake genuine relationship. So always strive to build genuine relationship. Focus on actually helping people, being authentic. ठीक है? Invest your time in other people so that they also ex invest their time in you and don't expect any immediate returns. Don't. ठीक है? एमबीए आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिखाएगा, टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, केस स्टडी से एक्सपोज़र देगा, अच्छे प्रोफेसर्स का एक्सेस देगा, अच्छा रिसोर्सेज़ का एक्सेस देगा, ठीक है? और आपको बहुत कुछ देगा, कैंपस लाइफ देगा, फन देगा. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ सेकंड चांसेस इन लाइफ एंड definitely the cost is a lot, the kind of pressure that you go through is a lot, but it builds you. Remember, if you lack the basic empathy, you lack basic work ethic, you lack basic emotional intelligence, MBA can't do everything for you. आपको खुद से effort मारना होगा. MBA will give you that door, which will not magically fix things for you, sorry, which will not magically fix things for you, but it will definitely give you a door which you can walk through in the right manner, and then things will be sorted. Degree opens door, but your competence to walk through them stays inside you. मैंने इतना कुछ किया एमबीए में that was because I chose to do it in that way and I've talked about it in my mistakes video. You can just go and see कि मैं क्या रिग्रेट करता हूँ बट मैंने क्या सही भी किया. सो लुक यार मैंने लास्ट के 18 मिनट 20 मिनट जितना भी देर मैंने बोला I destroyed every comforting myth about MBA. I told you about the placement scenario in very very raw manner जिसमें मैंने अपने बैचमेट्स का गलती बताया अपना गलती बताया क्या बोलते हैं ना कंपनीज का गलती बताया सिस्टम का गलती बताया बट देन वी कैनॉट ऑलवेज टेल कि भाई सब कुछ खराब है मेरे में भी कुछ खराबी थी मैंने भी कुछ प्रिपरेशन नहीं किया मैंने भी कुछ चीज़ें सीरियसली नहीं ली सामने वाले में भी खराबी थी इस सिस्टम में भी खराबी है जो सब सुधारने में लगे हैं कि नहीं वो पता नहीं बट ये राइट नाउ if there is no immediate fix does not mean it will never be fixed. You just have to stay there with the thought process कि हाँ कुछ तो हो सकता है. So that being said, my next video will be about how you can build your profile in UG that can help you better in your MBA, that can help you make best of the opportunities which you get once you are in your MBA when you are at the interview table somehow. ठीक है? Uh, I have debunked myths, I've talked about grades, I've talked about a lot of things, but remember one placement season does not define your career. One rejection or 10 rejections from any company does not define where you will end up in life. ठीक है? I was rejected by 7, 8 companies. I got at a good place. I'm running my YouTube channel. I'm in my home with my brother, sister, father, mother. बहुत अच्छा लगता है मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिला मेरे पैसे बच रहे हैं थोड़ा कम है बट पैसे बच रहे हैं राइट बट कोई है जो अपने फैमिली से दूर है जो बाहर खट रहा है जो धूप में है
ठीक है, खप अपना खाना खुद बना रहा है, नो वन इज़ गोइंग एंड सेइंग कि भाई मैं तुम्हारा केयर करता हूँ। सो देयर इज़ ऑलवेज़ सम विन्स एंड लूज़, इट्स नॉट ऑलवेज़ अ विन-विन। इफ इट इज़ अ विन-विन देन यू आर फॉर्च्यूनेट बट इट्स नॉट ऑलवेज़। I will end on that note. MBA is not a bad degree. You'll get a lot of chances, but yes, there are some harsh realities you need to know before you take a decision कि भाई करना है कि नहीं. And this video is exactly it. Thank you so much for watching till the end. See you soon, future managers.